ये आपका जो है बॉयलर रूम है। इसमें जो है कोयला फीड किया जाता था, स्टीम बनती थी, स्टीम से जो है वो टरबाइन से मोटर चला करती थी। बटन दबाएंगे तो यहाँ फायर हो जाएगा। फायर जैसी लाइट दिख रही है आपको। टेम्परेचर राइज होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और जो बॉयलर रूम थे वो 3 बॉटम पे थे। यहाँ पे 6 बॉयलर रूम थे। 3 मेरे ख्याल से इस साइड थे, 3 अदर साइड थे। जॉन फिलिप्स सीनियर टेलीग्राफिस्ट, डॉट्स एंड डैशेस। आई थिंक मॉर्स कोड या टेलीग्राम की तरह से जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता था। द मॉकन इंटरनेशनल मैरीन कम्युनिकेशन लिमिटेड। बेबी गर्ल बोर्न थर्सडे। इस तरह के मैसेजेस जो है वो सेंड किया जाता था। कम्युनिकेशन के लिए जो था वो मार्कोनी रूम था। मोर्स कोड भेजा जाता था जो टेलीग्राफ में यूज़ होता है। ये जो है पॉकेट वॉच इस तरह की। Disaster just before midnight on 14th April 1912, Titanic strikes the fatal iceberg. The ship and her crew are totally unprepared for the scale and speed of the events that follow. 11:30 p.m. Titanic is sailing at 20.5 knots. Fred Fleet reports iceberg right ahead. 12 a.m. Captain said the Titanic will sink. A distress signal is being sent. Captain orders to lower the lifeboats. The first lifeboat leaves with 20 people on board and 37 empty seats. 1:15 a.m. the ship tilts towards the bows. Passengers and crew start to panic. Some try to jump off the ship into the lifeboats. Titanic breaks down into two in the bow section sinks. And 2:20 a.m. the stern section sinks. Hundreds of the people are left floating in the icy water. तो कुल मिला के 11:30 से लेके 2:20 करीब 3 घंटे में जो है वो पूरा ही इवेंट फिनिश हो गया शुरू से अंत तक। इसमें कुछ जो है सर्वाइवल की स्टोरीज ऑडियो में प्ले की जाती हैं। Edward Brown Stewart first class saved by life jacket। कुछ सर्वाइवर यहाँ पे। Sydney was dived, he was not survived। लेकिन कुछ लोग जो उस टाइटैनिक के शिप में शामिल थे। Captain himself not survived and his body was never found। Edward Smith was commander of Titanic and her crew। कुछ कम्युनिकेशन जिसमें रिकॉर्डेड हैं और कुछ पिक्चर्स, मेमोरीज टाइटैनिक और उनमें सवार कुछ लोगों की। कुछ मेडल्स, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ चीज़ें। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ। फाइनल इफेक्ट्स क्या हुए। Conclusive news of whether a crew member has lived or died often comes from telegram. When a body is found, personal items are returned to the deceased family. Death certificate, fax, telegram, letter, keys, इस तरह के कुछ जो है सर्टिफिकेट दिए गए। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, इस तरह के जो है वो टेलीग्राम भेजे गए। और ये जो है वाइट स्टार लाइन की तरफ से जो भी चीज़ें बॉडी में मिली उनको वापस करने का जो है मैसेज भेजा गया, जैसे कीज़ हो गए, बुक्स हो गए। उस समय के मीडिया में कुछ न्यूज़ेस किस तरह से चली थी जब टाइटैनिक सिंक हुआ।
Daily Mirror, 12 April, 26 April, 26 April. Family of 8 who were in the Titanic by chance, all drowned in the disaster because there were not enough lifeboats. इंक्वायरी कमीशन में किस तरह से एमडी और अटॉर्नी जनरल की डिस्कशन. Have you considered the use of searchlights? I have not. That has never been considered by you. It has never been considered by us at all. But the testimony of Second Officer Charles Lightoff sheds further light on the issue. The conditions that night. Everything was against us. In the first place, there was no moon. Then there was no wind, not the slightest breath of air. And most particular of all, in my estimation, is the fact, a most extraordinary circumstance, that there was no swell. Had there been the slightest degree of swell, I have no doubt that the bird would have been seen in plenty of time to clear it. The lack of swell was important. Even with binoculars, it would have been hard to see the iceberg from a distance. But Frederick Free, the lookout on duty that night, and who saw the iceberg as it loomed over the Titanic, has strong views on the subject of binoculars. Well, a black object. What did you do? I struck 3 bells. Was it right ahead of you or on the port or starboard bow? Right ahead. When you were in the Oceanic and employed there as the lookout, did you have glasses? Yes. Glasses provided for you in the crow's nest? Yes. Every trip. And now, on the Titanic, did you ask for glasses? I did not, but George Simmons did. He was a lookout man too. You had better tell us what he said. He said there were none aboard for us. He intended for us. Now, Thomas Scanlon, MP, representing the National Sailors' Fleet. I understand that you had glasses in the crow's nest during the journey from Belfast to Southampton. Yes. Were those taken from you at Southampton? Yes. And do you think, if you had glasses, you could have seen the iceberg sooner? Certainly. How much sooner do you think you could have seen it? Time for the ship to get out of the way. So, it is your view that if you had had glasses, it would have made all the difference between safety and disaster? Yes. The lack of binoculars in the crow's nest may have contributed to the disaster, as did the absence of searchlights. And we believe that ships should carry searchlights, that every man taking a look out in such ships should undergo a sight test at regular intervals. 2 मई 1912 को जो है स्कॉटिश ड्रिल हॉल लंदन में इंक्वायरी शुरू हुई. 36 दिन, 94 विटनेस और 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन. कुछ आवाज़ें थर्ड क्लास पैसेंजर्स की, लेकिन ये माना गया कि फर्स्ट और सेकंड क्लास पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दी गई थी बचाने में. The inquiry is attempting to cut through the confusion. The women of the third class were drowned. I cannot account for it. No, sir. इस तरह के जो हैं वो क्वेश्चन चैम्बर थे जिसमें इंक्वायरी कंडक्ट की गई. Crew biography. If I click something, the people who lived, let me try out that. Okay, images में नहीं, इसमें तो कुछ काम हो नहीं रहा है. ये कुछ रिलीफ फंड चलाया गया टाइटैनिक के लिए. कुछ मेमोरियल्स हैं यहाँ पे. रिमेम्बरेंस, कुछ यादें टाइटैनिक की. The sinking of Titanic was a tragedy, but led to major improvements in safety at sea. कुछ जो हैं वो इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए, जिसमें बाइनोकुलर्स होना चाहिए, लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए,
उस तरह की चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें सैटेलाइट रिले सिग्नल्स भी थे। बाद में कोस्ट गार्ड को डिस्ट्रेस सिग्नल, शिप मॉडल ओरिया, ये जो है ये नए मॉडल्स हैं, एक्स्ट्रा कोलैप्सिबल लाइफ बोट्स, ताकि और लाइफ बोट्स आ सकें। चलिए दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ लॉन्ग बोट, स्मॉल बोट, कुछ लकड़ी का जो है ये बोट्स। साउथहैम्पटन, बिफोर साउथहैम्पटन 1000 ईयर्स लगता है, 8500 ईयर्स BC से लोग यहाँ रह रहे हैं, इसका कुछ एविडेंस है। द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। कुछ एविडेंस, कुछ टूल्स जो यहाँ मिले, जो बताते हैं कि यहाँ पे सिविलाइजेशन या ह्यूमन प्रेजेंस काफ़ी पहले से था। कुछ जो है वो हंट किए हुए प्राणियों के जो है वो सींग विंग, हड्डी वड्डी यहाँ पे हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी कुछ हथियार हैं। कुछ पॉटरी, क्ले पॉटरीज, metal workers. Settlers from northern Germany, Saxon people began to settle in England from around 450 AD. Who was Roser Masvidal? Was wealthy merchant. He was served as a diplomat at all cities, searcher for custom. Victorian immigrants. It's a reverse immigration stories, looks like. During the Victorian era, particularly between 1880s and early 90s, many people left Britain seeking a better life abroad. They went to Africa, India, Australia, New Zealand and North and South America. Wow. ये कुछ इंटरैक्टिव पिक्चर साउथहैम्पटन की, जहाँ आप क्लिक करके, मैप है बेसिकली, क्लिक करके और जानकारी ले सकते हैं। कुछ ट्रांस माइग्रेंट पासिंग थ्रू फॉर वर्कर्स, शॉपकीपर्स, माइनर्स, फैक्ट्री, लैंग्वेज इंग्लिश, इटालियन, गैलिक, यरिश, जर्मन, रशियन, पोलिश। People are going out of UK. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी यहाँ पे। सीफेयर्स, QSTS क्वीन मैरी, क्यूनॉट स्टीम शिप, ये भी काफ़ी बड़ा शिप है, क्वीन मैरी शिप। India. This is our home now. I lived in the UK for over 60 years. All my family are here. Very few family live in India anymore. ये कुछ इंडियंस जो कॉलोनियल टाइम में माइग्रेट हुए थे 1950s में भी कुछ लोग जो यहाँ आए थे, उनकी कुछ गाथाएं यहाँ पे। Similarly, Caribbean, then Chinese, then some of the refugees for different countries, like Uganda. जब ईदी अमीन आया था, उस समय की बात है। कुछ नामी शिप्स की डिटेल यहाँ पे हैं, आप जो है उनको पढ़ सकते हैं, जैसे कि E No. 1 लेविथन बैटललैंड,
क्या क्या फंक्शन थे उसके, कितनी लेंथ थी, कब से कब यूज़ रहा, कौन उसके ओनर्स थे, और इस क्वीन मैरी का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि ये क्या है, तो ये बताएगा कि इस तरह से जो है स्टीवर्ड्स यहाँ रहा करते थे। आप जो है वो वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। Well, you came on duty in the morning at 7 o'clock. You probably have a list of your ऑडियो है, वीडियो तो नज़र नहीं आ रहा इसमें। either needed a उसी तरह से अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये सोवेनियर्स और शॉप ऑन अ बोट, सोवेनियर शॉप। कुछ और पॉटरीज, रोमन कार्गोस, एम्फोरा मेड इन स्पेन, डिशेस, altar, goddess called Encasta, Romans, Southampton, a trooping port. कुछ वीडियोस साउथहैम्पटन लाइफ के।